Hello students, this is Garima Miss and today we are going to study 12th standard English syllabus, the most interesting topic of today, that is section C, writing skill 3.2, page number 141. Do schools really kill creativity, that is mind mapping? Yes students, today we are going to learn mind mapping. With the help of this topic we can study any topic in a very fun way. Students, this topic, that is mind mapping, is not only just related or restricted to your 12th standard syllabus of English, but also this technique you can use in any form of your studies in your lifetime. It is helpful for all the subjects, whatever subjects you are studying, right from physics, chemistry, bio, or for example BK, SP, OC, whichever subjects you are studying, you can take the help of mind mapping and make your studies very interesting, easy, and it will really make your topic easy to understand. So before starting, let's see what we are going to do today. It is listed in this slide properly. Firstly, we will do introduction of the mind mapping, where we are going to study first what is mind mapping, how to make mind mapping for studying purpose, and different templates of mind mapping that we will learn. Secondly, after that, we are going to see the explanation of the chapter 3.2, Do Schools Really Kill Creativity, which is very much required to know what do the chapter says. Thirdly, after completing the chapter, we will come to the icebreakers question, where it speaks us or teaches us how to make the mind mapping. And lastly, we will do brainstorming of this chapter, where we are going to learn how to solve mind mapping questions which are going to come in our board examination. So, without wasting time, let's move on to the introduction of the mind mapping. Do schools really kill creativity? That is mind mapping. Students, in this modern world, creativity plays a very important role in our life. In fact, it is one of the most important characteristics of being human. But now it is said that we are killing creativity of our students. So by considering the same thing, that for developing the creativity we have to learn this chapter, that is 3.2, Do School Really Kill Creativity, or the methods or techniques to start the understanding by mind mapping. So what is mind mapping? Let's start. Students, so many students have the same problem. सारे बच्चों का एक ही प्रॉब्लम रहता है, और वो पता है क्या एग्जाम्पल देते हैं एग्जाम टाइमिंग में. फॉर एग्जाम्पल दे से, मैम वी स्टडी सो मच बट वी डिडंट रिमेंबर. पढ़ा तो बहुत था पर कुछ याद नहीं है. आई वॉज क्वाइट कन्फ्यूज्ड इन एग्जाम पेपर. yesterday whatever I studied, today in exam I forgot. I studied everything but in an exam I was totally confused and blank. पढ़ता तो सब हूँ पर एग्जाम में सब ब्लैंक हो जाता हूँ. आफ्टर ऑल हाउ मच आई शुड रिमेंबर. ये सारा चीज़ तुम लोग अपने टीचर या पेरेंट्स को बोलते हो. सो सेवरल क्वेश्चंस बट आंसर इज ओनली वन. यूज द टेक्निक ऑफ माइंड मैपिंग while studying. Because of mind mapping, whatever you are studying you will quickly memorize. Because of the help of the mind mapping, your learning would be quick and fast revision would happen. Because of mind mapping, your retention, जो याद करने का जो कैपेसिटी है, would be longer period, ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा. So if you are using the smartphones, और तुम्हारा स्मार्टफोन स्मार्ट है, तो तुम कब होगे स्मार्ट? When you will become smart. So be creative, be smart, and try to learn in a fun way by using the technique mind mapping. Mind mapping technique, do you know who uses this? Yes, today I will tell.
Mind mapping is a technique. It is used by CA students, CS students, law students, doctors and researchers, MPSC and UPSC aspirant students, and even the board toppers are taking the help of mind mapping to complete their elaborative studies and crack their exam. So, mind mapping is a technique, or we can say is a term which is itself in a very broad way. माइंड मैपिंग टर्म बहुत बड़ा टर्म है। जो चलो समझते हैं क्या है ये। हाउ मच यू विल यूज़ इन स्टडीज़ दैट मच इट इज़ यूज्ड। माइंड मैपिंग को आप अपने स्टडीज़ में यूज़ करना स्टार्ट कर दो स्टूडेंट्स। इवेंचुअली क्रिएटिंग अ सेल्फ ग्रोथ, ये जो माइंड मैपिंग है ना, इवेंचुअली क्रिएटिंग अ सेल्फ ग्रोथ। कैन आई से स्टडीज़ फ्रॉम चाइल्डहुड आवर mind is more attracted to colors, shades, drawings, graphics. yes, color वगैरह देख के, graphics, shades देख के हम बहुत attract होते हैं। this type thing we can catch more faster। इस टाइप की टीचिंग हम लोग जल्दी रिमेंबर करते हैं और वो चीज़ हमको याद भी रहती है। माइंड मैपिंग कैन चेंज आवर डल ब्लैक एंड वाइट स्टडीज़। टेक्स्ट बुक देखो ब्लैक एंड वाइट कलर में ही है, उसको कन्वर्ट कर सकता है इन अ कलरफुल स्टडीज एंड मेक द लर्निंग क्रिएटिव इन अ फन वे। There are two types of making the notes. First one is linear and second one is non-linear. In linear is a very easy and common type of making the notes where you just line after line you make headings and below it you write subheadings and then write points and subpoints. Okay, so that is very traditional method, right? It is common and simple but very boring and monotonous. It requires lots of hard work to make the notes, but when time comes to remember we forget. Laborious, very time consuming students, and the output is nothing. So let's see what is non-linear method. Non-linear method are of various types. First one is table format, where you can use the tables, where you can make statistical numerical data which can easily be formatted और उसको आप easily sequence wise रट सकते हो. Next is the flow chart, which is the best way of understanding any of the subjects like law, history जैसे difficult subjects भी आप अगर देखो तो flow chart के through easily you can understand. Okay, so you can study sequence wise and you can make the flow chart while doing this. Okay, next is the tree diagram. It is the best way to understand OC, SB, Eco, CS, law, geography type subjects, and due to tree diagram your study would be more easier. Mind map in which you can explore more your creativity level of your mind. Mind mapping can be in the form of diagrams, arrows, shapes, colors you can use to make the innovative type of notes. So now the question is, what is mind mapping? So it is a graphical representation of your ideas and concepts are presented through this. It's a visual thinking tool. With that you can store a huge information and can summarize any topic in a quick period of time. This is best way to analyze, comprehend your ideas and synthesize and recall it. Here you can use arrows, shapes, lines, connectivity, balloons, boxes, curved arrows, scrolls. You can use it, you can make it a creative notes. You can use colors and highlighters even, but yes, less colors please use. Come color use karna. Restrict to 3 or 4 colors only, okay? Because if in mind mapping if you are using more colors, that will become quite confusing for you to understand. So अपने सोच के दायरे को बढ़ाइए. पुराने टेक्निक्स जो थी पढ़ने की उसको just leave it and start becoming more creative. Start making the notes in a very stylish way so that you can remember. Yes, so let's widen your idea of learning and use this technique in your learning process. So where mind maps can be used? Firstly, it can be used for making notes.
सेकेंडली इट कैन बी यूज्ड फॉर क्विक स्टडी ऑफ मेमोराइजेशन, जल्दी याद हो जाता है आपको. फॉर एनी रिसर्च वर्क इट इज़ यूज्ड. फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन दैट इट इज़ यूज्ड. ब्रेन स्टॉर्मिंग तो सबको पता है, दैट इज़ यूज्ड. फॉर एनी प्रॉब्लम्स solution is mind mapping, especially in the field of education. So now you can understand general idea on how to make mind maps. So firstly, start using your page in landscape or horizontal way format so that you will get more wide space to cover your points. ऐसा करने के बाद आप पहले इन बिटवीन ऑफ द पेज, सेंटर ऑफ द पेज, राइट मेन पॉइंट्स और सेंट्रल आइडिया ऑफ द टॉपिक, उसको आप एक सर्कल बना दीजिए. देन हाउ मच कनेक्टर्स यू रिक्वायर दैट मच यू पुट ओवर देयर. जितने कनेक्टर्स उतने एरोज बनाइए. एंड इन फ्रंट ऑफ द एरोज राइट डाउन द हेडिंग, मेंशन हेडिंग. हेडिंग मेंशन करने के बाद अंडर इट राइट subheading and then write points and subpoints. This is general and basic idea of making mind maps, you know. Now remember, in mind map brevity मतलब short में ही लिखना है is very essential in mind mapping. Don't use bigger sentences. Instead use, आप लोग keywords use कर सकते हो. Mnemonics like my very educated mother just served us noodles. इससे आप लोगों ने इजीली प्लैनेट के नाम से याद रख लिए. ऐसे करके भी आप तैयार कर सकते हो माइंड मैप. शेप्स एंड एरोज में बना सकते हो. स्क्रिबल्स और बेसिक ड्राइंग यू कैन मेक. फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज you can use the arrows of up and down. Yes, so here how much you are creative, that much better for you to gain marks in your exam. So we can say that mind maps are tools which enables you to visually structure your ideas to enable better registration and shift recall. mind map के वजह से ही आप तो स्ट्रक्चर बनाते हो, वो स्ट्रक्चर आपके दिमाग में हमेशा के लिए रिटेन हो सकता है. ए माइंड मैप इज़ अ डायग्राम, यूजुअली इट इज़ नॉन लीनियर. इससे हमें ये पता चला, ये पूरे इंट्रोडक्शन में हमने ये समझा कि ये नॉन लीनियर और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है. यस, एंड it's having a detailed free following framework around a central concept idea. माइंड मैपिंग में हमने ये भी समझा इंट्रोडक्शन में कि मिडिल ऑफ द पेज आपको मेन जो आइडिया है वो लिखना है, एंड एट द साइड्स उसके जितने पॉइंटर्स, जितने एरोज डाल के आप कनेक्टर्स बना सकते हो, इट इज़ गुड. देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ मेकिंग द माइंड मैप्स. That is common to all of them through is that they can turn a large chunks of information into a relatable, concise diagram which has colorful coded arms and labels and sub-labels as desired. हमने ये भी सीखा through this that if you will read the textbook is filled with junk of information. एक example दूँ आपको. लाइक जंक ऑफ डेटा का बेस्ट एग्जाम्पल है रेफ्रिजरेटर. आपके पास जो सामान रहता है, यू डंप ऑल द थिंग्स एग्जैक्टली इन द रेफ्रिजरेटर. सेम वे वॉट एवर द नोट्स, बुक्स, वॉट एवर वी आर हैविंग, वी जस्ट कीप इन फ्रंट ऑफ आवर ब्रेन. और ब्रेन क्या करता है, जस्ट लुक एट द डेटा एंड कीप्स इन आवर माइंड. तो वो जो डेटा है, दैट्स द रीज़न वाई द ब्रेन डू नॉट रिकॉल और रिटेन. ब्रेन हमारा उतना डेटा जितना हम टेक्स्ट बुक सामने रख के पढ़ते हैं वो नहीं रिकॉल करता है, नहीं अंडरस्टैंड कर पाता है. द मेन रीज़न इज़ दैट वी आर नॉट स्टडिंग इन अ प्रॉपर क्रिएटिव वे. इफ़ यू आर स्टडिंग इन अ प्रॉपर क्रिएटिव वे, लाइक अगर हम लोग उसी का फ्रेमवर्क बना देते हैं, एरोज, बबल्स, स्क्रिबल्स, रिटेन दैट टॉपिक फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. Mind maps are aligned to your brain's nature way of doing things. Mind mapping does not require for you to think in order. आप ज़रूरी नहीं है कि टेक्स्ट बुक में जैसे दिया वैसे रीड करो. माइंड मैप की वजह से you can remember all the things
through the diagrammatic presentation, through the graphical presentation. Your ideas should be fired as they come and can be revisited and reorganized as need be. अ विजुअल एग्जाम्पल मतलब ये डायग्रामेटिक रहता है. ऑफ कोर्स देखोगे माइंड मैप की वजह से आप जो डायग्राम्स बनाते हो वो even at the exam also you remember, okay, and this will help for the better understanding of any of the topic that you are studying. और सो माइंड मैपिंग इजी वर्ड्स में अगर मैं समझाऊँ, एक मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए स्टडी करते हो नोट्स वगैरह, उसको दिमाग में हमेशा के लिए रिमेंबर करने के लिए जो प्लान करते हो, जो मैप बनाते हो, उसको ही कहते हैं माइंड मैपिंग. So let's start line by line explanation of this chapter. However, students, we will see that in this chapter there are 3 to 4 activities are given. Through this we will understand how to make the mind map. आप देखोगे चैप्टर में 3 to 4 एग्जाम्पल्स हैं ऑफ सर्टेन टाइप्स विच विल मेक्स अस अंडरस्टैंड कि कैसे आपको माइंड मैपिंग कर बनाना है. एग्ज़ाम में स्टूडेंट एक क्वेश्चन दिया रहेगा, वन क्वेश्चन इज़ देयर एंड उससे रिलेटेड आपको कुछ पॉइंट्स दिए रहेंगे. यू हैव टू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स विच आर गिवन एंड देन यू हैव टू मेक द माइंड मैपिंग. पहले आपको अंडरस्टैंड करना है व्हाट इज़ द मेन टॉपिक, जिसको आप लोग मिडिल और सेंटर ऑफ द पेज लिखोगे. For example, here I had done the mind mapping of tenses. आफ्टर दैट यू विल मेक द एरोस एंड एरोस से आप लोग कनेक्टर्स सेकेंडरी लेवल के बनाओगे, फिर टर्चरी लेवल के कनेक्टर्स बना के पॉइंट्स, सब पॉइंट्स, हेडिंग, सब हेडिंग एंड बिलो इट सब पॉइंट्स लिखना स्टार्ट करोगे. तो इसको कहते हैं माइंड मैपिंग. सो लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर. Students, mind mapping is a very powerful way of making the notes. Mind mapping not only highlight important facts but also show overall structure of a subject. तो आप अपने चैप्टर में देखो 142 पेज नंबर एक्टिविटी से स्टार्ट हुआ है. आपको ये टेक्स्ट बुक में इफ़ यू वुड सी देयर आर 4 एक्टिविटीज़ आर गिवन टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट इन बोर्ड एग्जाम हाउ टू सॉल्व दिस. So must remember student, you have to present in a graphical way. Graphical way में अपने ideas को present करना है. Is that clear? So what here it has been said, please see. Whenever you have to complete a similar type of detailed graphical figure in your own style, showing the thoughts, ideas, कॉन्सेप्ट्स दैट कीप ऑन जनरेटिंग इन योर माइंड. आपको एक एग्ज़ाम में टॉपिक दिया रहेगा, मे बी फॉर एग्जांपल ले लो गेम्स या स्पोर्ट्स के ऊपर आपको एक टॉपिक दिया है. अब उससे रिलेटेड आपको हेडिंग्स, देन सब हेडिंग्स, देन अंडर इट पॉइंट्स एंड सब पॉइंट्स निकालने रहेंगे और वो आपको इन अ ग्राफिकल वे यू हैव टू प्रेजेंट इट. इन वॉट वे यू लाइक दैट यू हैव टू प्रेजेंट, सो दैट what is coming in your generating in your mind, किस टाइप का आइडियाज़ थॉट्स आपके दिमाग में उस टॉपिक को लेके आ रहा है, दैट यू हैव टू एक्सप्लोर इन बाय योर सेल्फ. So you choose a particular style, design or graphical representation to describe the same idea, fact, situation. Then this type of presentation can be called mind mapping. What is coming in your mind, whatever the ideas are coming, generating in your mind, you have to present through the graphical present way. तो उसी graphical way में आप जैसे आप present करते हो, we all call it as mind mapping, where you can add by your own ideas, own situation, own facts, जो आपको reality लगता है with that particular topic, you can add to it. Is that clear? So I think in this slide it is quite clear, and in the next slide you can see that is 142 page number second paragraph. क्या बोला है देखो, how we can make the mind map. माइंड मैप बनाने के लिए व्हाट आर द थिंग्स इट इज़ रिक्वायर्ड. यू कैन यूज़ डिफरेंट शेप्स, आप डिफरेंट शेप्स बना सकते हो. देखो यहाँ पे मैंने डिफरेंट शेप्स भी प्रेजेंट किया है. टेक्स्ट बुक में भी यू कैन सी एरोज आर देयर, लाइन्स आर देयर, कनेक्टर्स आर देयर. बलून्स आप यूज़ कर सकते हो, पेन से बलून्स बना सकते हो, ठीक है. बॉक्सेस बना सकते हो, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप के बॉक्सेस. कर्व्ड एरोज बना सकते हो, ठीक है, और कनेक्टर्स दिखा सकते हो. कॉल आउट्स मतलब होता है सिंबल, डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स बना के कर सकते हो, ठीक है. देन स्क्रिबल्स मतलब क्या होता है, ड्रॉ केयरलेसली इन अ हरी वे. अभी जैसे फॉर एग्जांपल क्लासरूम में कोई टीचर कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग का क्वेश्चन अगर मैं लिखा रहा है तो फिर आप लोग जल्दी जल्दी
आपके पास तो पेंसिल रहता ही नहीं है, तो आप लोग पेन से ही अपने से ही गोल ऐसा बना के सर्कुलर बना के लेता है यस, सो दैट इज़ द स्क्रिबल्स, तो वो भी बना सकते हो। स्क्रोल्स, ओके, स्क्रोल सेम वे, कनेक्टर्स जो रहते हैं और मिडिल में मेन आइडियाज़। एक्सप्लोजन्स मतलब मालूम है, गोल करके या ऐसे स्पार्क दिखा सकते हो। नेक्स्ट यू कैन सी टू डिस्क्राइब योर पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप देख लो स्टूडेंट, हियर फिगरेटिव प्रेजेंट भी दिया है, मैंने फिगर्स भी बनाए कि माइंड मैपिंग में किस टाइप का शेप्स आपको यूज़ करने का है। दिस इज़ नोन एज माइंड मैपिंग, हाउ टू प्रेजेंट ऑन द पेपर। माइंड मैपिंग को पेपर पे आप कैसे प्रेजेंट करोगे विद द हेल्प ऑफ दीज शेप्स, that is taught in this slide. one passage of a person named Julian Astle, who is the writer of this text. Do schools really kill creativity? What he says, please see. He is the director of the education at the RSA. RSA full form Royal Society of Arts in Britain. He was working over there, and previously he worked in number 10 Downing Street as deputy director of the British Prime Minister's Policy Unit and Senior Policy Advisor to Deputy Prime Minister Nick Clegg. Previously, he was the Director of Centre Forum, a Westminster based think tank. Think tank means bringing creativity in the field of education, especially for the children. Okay, so he was also worked as a post-conflict advisor of the British government in Whitehall and to the United Nations in Bosnia and Kosovo. Not only he was working under the British government as a important member, later on he even went to the United Nations, that is UN में जाके he had worked for the Bosnia and Kosovo for bringing more लिटरेसी रेट इन दीज कंट्रीज। तो लिटरेसी रेट को गेन करने के लिए ही हैड वर्कड, एंड फॉर दैट ही हैड रियली made his efforts that all the people would be, all the children would be educated. Now he had written this chapter because one day he had seen one TED talks. Next para, in the most vast TED, TED, TED मीन्स होता है टेक्नोलॉजी एंटरटेनमेंट डिज़ाइन टॉक। ये यूएस बेस्ड एक सीरियल है, जैसे हम लोगों में बिग बॉस जैसे एक सीरियल आता है, वैसे टेड टॉक करके अमेरिका में एक सीरियल आता है, ओके, ऑफ ऑल टाइम्स। एजुकेशनलिस्ट सर कैन रॉबिन्सन FRSA क्लेम्स दैट स्कूल स्किल क्रिएटिविटी। उसमें कौन आया हुआ था वो इंटरव्यू में, वाइल ही वॉज वॉचिंग ही हैड सीन दैट इन द इंटरव्यू सर केन रॉबिन्सन हैड कम एंड व्हाट ही सेड दैट द स्कूल स्किल क्रिएटिविटी। उन्होंने क्या बोला कि स्कूल जो आजकल के हैं वो रियली चिल्ड्रन के क्रिएटिविटी को किल कर रहे हैं, एंड आर्गुइंग दैट वी डोंट ग्रो इन टू द क्रिएटिविटी, वी ग्रो आउट ऑफ इट। चिल्ड्रन का अगर देखो तो वी आर ओनली गिविंग ऑल द सब्जेक्ट्स टू स्टडी एंड द चिल्ड्रन आर स्टडिंग एंड इन एग्ज़ाम दे गिव द एग्ज़ाम एंड देन दे गो टू द नेक्स्ट क्लास। तो इसमें चिल्ड्रन ने क्रिएट क्या किया, वॉट एवर वॉज देयर इन द टेक्स्ट बुक दे स्टडीड एंड दे पास, यस। सो रादर वी गेट एजुकेटेड आउट ऑफ इट, मतलब हम लोग जस्ट वो एजुकेट हो रहे हैं, मतलब चैप्टर वो कोर्स वो सिलेबस पढ़ाई कंप्लीट किया, हम 10th एजुकेटेड हो गए, 12th एजुकेटेड हो गए, ग्रेजुएशन हो गया, मतलब मैं फुल्ली एजुकेटेड हो गया। तो ये एजुकेशन किस काम का, इफ़ यू आर नॉट एबल टू क्रिएट एनीथिंग, यू आर ओनली मगिंग अप द चैप्टर्स एंड कंप्लीटिंग आर syllabus and no development happens in the children's mind. Yet to Robinson, creativity is as important as literacy as we should afford it the same status. आप लोग जैसे बोलते हो कि एनी ह्यूमन बीइंग को लिटरेट होना ज़रूरी है, तो लिटरेट डजंट मीन कि आप टेक्स्ट बुक पूरा बाय हार्ट करके गया, एग्ज़ाम में पूरा लिख कर आया और उसके बाद आप पास हो गया, बोला मैं पास हो गया। पर वो एजुकेशन तब काम आता है जब आप कोई रियल लाइफ में वो एजुकेशन को यूज़ करते हो। हियर द इन रियल लाइफ योर एजुकेशन इज़ नॉट एट ऑल यूज्ड, आप बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हो। आप अगर पूरा पढ़ाई करके जाते हो, पूरा नोट्स लिख के आते, पूरा पढ़ाई करके जाते हो, एग्ज़ाम में पूरा अच्छे से लिख के आते हो, बट इन लाइफ यू स्टार्ट डूइंग द करप्शन, यू स्टार्ट डूइंग द रॉन्ग थिंग्स इन योर लाइफ, तो ये एजुकेशन किस काम का, इट इज़ ऑफ नो यूज। सो एजुकेशन इज समथिंग दैट वी शुड क्रिएट, वी शुड डू समथिंग, वी शुड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द एजुकेशन। सो Sir Ken Robinson was really true at that time. He said true creativity is based on knowledge which is in turn based on literacy. तभी हम अपने को
एजुकेटेड समझना चाहिए. व्हेन वी रियली क्रिएट समथिंग वी ट्राई टू क्रिएट मीन्स दैट नॉलेज वी गेट इन द चैप्टर्स. हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, एवरी चैप्टर में हम लोग को इतने सारे मोरल्स पता चलते हैं, वैल्यूज़ पता चलते हैं, पर वो वैल्यूज़ हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं क्या? दैट वी हैव टू पे अटेंशन ऑन इट. ओके, अगर वो करने लगते हैं तो अकॉर्डिंग टू सर केन रॉबिन्सन हम लोग रियली एक लिटरेट इंसान है. Our schools where children develop the literacy skills on which all further learning depends are therefore not killing creativity but cultivating it by providing the foundations young people need to be properly creative. So here you can see. For example, व्हाट अबाउट योर अदर करिकुलर एक्टिविटीज़. कुछ स्टूडेंट रहते हैं जो अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी बहुत ही स्ट्रांग रहते हैं, और अगर उसको इम्पॉर्टेंट डायरेक्शन नहीं मिला, इफ़ यू आर नॉट गिविंग दैट इन टू अ प्रॉपर डायरेक्शन, इट मीन्स द टीचर, इट मीन्स द स्कूल स्टाफ इज़ किलिंग द चिल्ड्रंस क्रिएटिविटी माइंड. जो कि वो आगे अगर उसको बराबर, अगर हम लोग स्पोर्ट्स में डालते हैं, अगर उसको हम लोग बराबर ट्रेनिंग देते हैं क्रिकेट का, तो वो स्टूडेंट नॉट ओनली स्टडीज़ बट ऑल्सो ही वुड बिकम अ गुड क्रिकेटर, गुड बैट्समैन इन हिज लाइफ टाइम. तो और ये दो जो टू पैराग्राफ है उसको यू कैन सी हाउ इट इज़ प्रेजेंट इन ए माइंड मैपिंग. तो आपने देखा एक सर्कुलर बनाया है सर केन रॉबिन्सन क्लेम्स एंड व्हाट हिज 3 पॉइंट्स. मैंने कहा ना की वर्ड सिर्फ लिखने का है आप लोगों को मेन पॉइंट्स के हेडिंग्स में. तो वो क्या है? दैट इज स्कूल किल्स क्रिएटिविटी. ये तो केन रॉबिन्सन का फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था. सेकेंड, एजुकेशन आउट ऑफ क्रिएटिविटी, मतलब आजकल का एजुकेशन देर इज़ नो क्रिएटिविटी इज देयर. एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन इज क्रिएटिविटी टू बी एक्वायर्ड इन एजुकेशन इटसेल्फ. अगर हमको क्रिएटिविटी चिल्ड्रन का इंक्रीज करना है तो हमको एजुकेशन का पैटर्न टोटली चेंज करना है. सो दैट हियर इट हैज़ बीन सेड. सो इन दिस वे यू हैव टू डू. सो दिस फर्स्ट एक्टिविटी इज कंप्लीट. नेक्स्ट एक्टिविटी. As evidence of how school kill creativity, Robinson cites the example of a young girl, Gillian Lane, who at the age of 8 was already viewed as a problem student with a probable learning difficulty due to her inability to sit still and concentrate. When her mother sought a medical explanation for the Gillian's constant fidgeting, underline the word, it means not able to concentrate. Fidgeting means not able to concentrate and lack of focus. The doctor suggested they speak privately. एक सर केन रॉबिन्सन ने एक एग्जाम्पल भी दिया Gillian Lane नाम का एक लड़की का जो 8 इयर्स की जब थी, तो वो स्कूल में उसको प्रॉब्लम चाइल्ड बोलते थे. प्रॉब्लम चाइल्ड मतलब क्या? बहुत प्रॉब्लम करती है क्लास में, कभी ध्यान नहीं देती है, कॉन्सेंट्रेट नहीं करती. फाइनली उसकी मॉम इतने सारे कंप्लेंट टीचर्स से आ गए कि वेयर शी टेकन द चाइल्ड Gillian Lane टू द मेडिकल एडवाइस लेने के लिए. शी वेंट टू द डॉक्टर. द डॉक्टर सेड दैट आई वांट टू टॉक विद Gillian privately. डॉक्टर ने बोला कि आप प्लीज़ एक काम करो, पेरेंट्स जो आए थे उनको बोला कि आप लोग दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाओ. और डॉक्टर भी खुद भी वो डॉक्टर वहाँ पे स्टे नहीं किया. डॉक्टर भी व्हाट ही हैड डन, डॉक्टर हैड टर्न्ड ऑन द रेडियो. डॉक्टर के पास एक रेडियो था, वो रेडियो में कुछ सॉन्ग्स आ रहे थे, तो वो सॉन्ग स्टार्ट किया. एंड इवन डॉक्टर ऑल्सो लेफ्ट दैट प्लेस. डॉक्टर ऑल्सो वेंट टू द अनदर रूम, पेरेंट्स ऑल्सो वेंट टू द अनदर रूम. Left alone in a music-filled room, Young Gillian began to dance. रूम में कोई नहीं था, Gillian Lane सॉन्ग सुन रही थी. तो थोड़ी देर के बाद क्या हुआ? Gillian started dancing. And when she started dancing, observing her through the window, the doctor turned to her mother. डॉक्टर देख रहा था कि ये क्या कर रही है 8-year-old गर्ल. तो डॉक्टर ने उसकी मॉम को बुला के शो किया कि देखो, this is the thing that this girl wants to do. This girl is not interested in studies. This girl is interested more in dancing. Okay, so you can see, observing her through window, the doctor turned to her mother. Gillian is not sick, but she is a dancer. Doctor claimed that this girl is born dancer. वो डांसर बनना चाहती है. वाई यू आर फोर्सिंग हर टू डू द स्टडी? शी इज़ मोर टैलेंटेड इन डांसिंग. टुडे एट द एज ऑफ 92, Gillian Lane
can look back on a long career in ballet dance and musical theatre, which saw her become one of the world's most successful choreographers with hits like Andrew Leonard, Weber's Cats and Phantom of the Opera among her many achievements. आज जब 92 ईयर की Jillian Lane. विलन हो गई है, she remember her days when she was 8 year old and how the mother was very much tensioned about Jillian Lane. and today when she remembers her days, it is just she was so happy to know that the doctor had advised to the parents that this is actually Jillian wants to do. It means the doctor realized the real talent in Jillian. Yet her school had all about written her off, mistaking her extraordinary talent for some form of behavioral problem or cognitive impairment. Cognitive means mental impairment, means mental problem. तो स्कूल के वो जो टीचर्स थे जो डेली लिख लिख के दे रहे थे लाइक उसको मेंटल प्रॉब्लम है, वो कॉन्सेंट्रेट करके बैठ के पढ़ नहीं सकती है. But after that, this girl worked hard and became a great dancer. By birth is a great dancer. She wants more motivation in the dancing field, not in the studying field. ये एक पैराग्राफ को आपको अगर माइंड मैप करना है, ओनली मेन पॉइंट्स लिखना है, तो हाउ यू विल डू. पूरा पैसेज किसके ऊपर था? वी ऑल नो इट इज अबाउट Jillian Lane. okay. Now you can see first point what would be, you have to take out the कनेक्टर्स बनाने हैं आपको, ठीक है. और कनेक्टर्स को आप कलरफुल भी कर सकते हो. देखो यहाँ पे 2 कलर्स यूज़ किया है, ग्रीन एंड ब्लू. यस. सो यंग गर्ल 8 years of age, problem student firstly. Second, inability to sit still and concentrate on studies. Third, doctor medical explanation. Fourth, doctor turned on radio, Jillian alone began to dance. told to the parents that she is not sick. तो सिर्फ लिखो not sick but a dancer, ठीक है. और लास्ट में the most important thing about her career that at the musical theatre in ballet dance, world most famous successful choreographer. सिर्फ मेन पॉइंट्स आपको लिखना है, की पॉइंट्स याद है ना. यस. स्कूल इग्नोर्ड हर एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट. तो इसका मेन क्या है? दैट द स्कूल डिडंट रियलाइज द चिल्ड्रन एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट हिडन इन Jillian Lane. Now you can see on page number 143 below the mind map a huge amount. वहाँ से आप लोग देखो, मैंने उसी चीज़ को पॉइंट्स में प्रेजेंट किया है इन दिस स्लाइड फॉर यू टू मेक इट मोर अंडरस्टैंड क्लियरली. तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? प्लीज सी. अ ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसर्च ऑन स्किल एक्विजिशन हैज़ फाउंड दैट द स्किल्स डेवलप्ड बाय ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस आर वेरी रेयरली generalized to other areas and are in fact very closely related to the specific training. Students, you can see nowadays various training sessions are happening और उसमें प्रैक्टिस भी कराया जाता है. लाइक अगर आपको इंटरेस्ट है फुटबॉल में, बैडमिंटन में और एनी ऑफ द कोर्सेज दैट यू आर इंटरेस्टेड लाइक ड्राइंग, क्राफ्ट, ठीक है. तो ऑफकोर्स वो ट्रेनिंग से चिल्ड्रन का क्रिएटिविटी लेवल बहुत इंक्रीज होता है. Yes, but you can see why not our school is bringing such creativity in the school itself. वो चीज़ वो स्कूल ही क्यों नहीं सिखाता है? वाई स्टूडेंट्स को अलग टाइम के लिए जाना पड़ता है, स्पोर्ट्स क्लब, यू नो, डांसिंग के लिए जाना पड़ता है अलग 1 hour 2 hour. स्कूल टाइमिंग में इफ़ वी आर लर्निंग नॉट ओनली स्टडीज़ बट ऑल्सो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, it is more, or training if they are getting, it is more beneficial for the children itself. So it is well understood over here that if we are starting mind mapping in all the areas, it means in all the subject, it is beneficial for the students. So students should understand that through this mind mapping technique, try to understand and retain that particular topic. Okay, second para. Critical thinking is an important part of most disciplines. Some very important line. Critical thinking means we start thinking about what we want to do. Okay, critical thinking you can see in any of the disciplines, in any of the subject is of more useful. Yes, if we are studying mathematics, if we are studying history, any of the subject if we are studying, student, we require to think.
कोई भी सब्जेक्ट्स, ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट्स में ही आप माइंड मैपिंग के बारे में सोच रहे हो, लाइक हिस्ट्री में हम लोग माइंड मैपिंग कर सकते हैं, आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स में माइंड मैपिंग का टेक्निक बना के क्रिएटिविटी ला सकते हो इन द स्टडिंग एंड मेकिंग योर स्टडिंग बोरिंग को आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हो। यस, तो यही बोला है आपने को कि क्रिटिकल थिंकिंग हमको अभी स्टार्ट करना है ऑफ एनी ऑफ द डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मीन्स एनी ऑफ द सब्जेक्ट्स। और critical thinking, if you would see, if you ask any disciplinary experts to describe what they mean by critical thinking, you may well find considerable similarities in the responses of mathematicians and historians. The temptation is then to think that they are describing the same thing, but they are not. Okay, सारे सब्जेक्ट में क्रिएटिविटी लाना, इफ़ यू वुड सी, इज़ डिफरेंट। अलग अलग वे से आप डिफरेंट वे से ला सकते हो। मतलब अगर आप मैथ्स में जो क्रिएटिविटी ला रहे हो, सेम चीज़ आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी में नहीं ला सकते हो। ऑल द सब्जेक्ट्स, इफ़ यू वांट टू ब्रिंग द क्रिएटिविटी, इट इज़ ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स। ओके, द सेम इज़ ट्रू फॉर क्रिएटिविटी ऑल्सो। सेम way it happens to creativity. Creativity is not just a single thing, but is in fact a whole collection of similar but different processes. Okay, uh, creativity, for example, in mathematics, okay, is not same as creativity in visual arts. Yes, so अगर आप देखोगे क्रिएटिविटी को, अगर आप सोच रहे हो कि मैं सब सारे सब्जेक्ट्स में सेम क्रिएटिविटी ला सकती हूँ, तो यू कांट ब्रिंग द सेम क्रिएटिविटी इन ऑल द सब्जेक्ट्स। आप ला सकते हो क्रिएटिविटी, बट हाउ यू कैन ब्रिंग बाय डिफरेंट थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग वही बोला है कि आप स्टार्ट करो थिंक करना कि आप कैसे कोई सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग वे में लर्न कर सकते हो, एंड दैट लर्निंग यू कैन रिमेंबर फॉर एवर। ओके, नॉर्मली हम लोग अगर स्टडीज़ करते हैं यूनिट टेस्ट का भी, जैसे यूनिट टेस्ट हुआ तो वो यूनिट टेस्ट आपने पढ़ाई किया, पढ़ने के बाद आप फिर भूल गए, यू जस्ट फॉरगेट। ओके, उसके बाद आप सेम का प्रिपरेशन करने लगे, सेम हो गया तो सेम को भी भूल गया। तो ये ऐसा लर्निंग इज़ नॉट नोन considered as a learning. Learning is something that we remember for throughout our lifetime. Yes, हम हमेशा याद रखें वो learning and we try to use that learning. That here it has been said, and for that we require the creativity in the learning in our subjects. If a student decide to create in mathematics by deciding that 2 plus 2 equal to 3, that is not being a creative. अगर कोई स्टूडेंट सोच रहा है कि मुझे मैथमेटिक्स में क्रिएटिव लाना है, जैसे अगर मैं 2 प्लस 2 इक्वल टू 3 लिखता हूँ, तो तब तो ये रॉन्ग हो गया ना, 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। सो इसको कौन क्रिएटिविटी बोलेगा? दिस इज जस्ट अ रॉन्ग क्रिएटिविटी। इट इज जस्ट द सिली, सिंस द स्टूडेंट इज नो लॉन्गर डूइंग मैथमेटिक्स, ओके, ही इज doing just wrong. So must remember, creativity involves being at the edge of a field but still being within it. Hence, it is well understood over here that creativity is at the edge. It means it is at the outline of all the subjects, and it is not only outline of all the subjects but also it is within the subjects also. ओके, तो सारे क्रिएटिविटी अगर आप कर रहे हो तो सब सब्जेक्ट में डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। एवरी सब्जेक्ट द क्रिएटिविटी लेवल इज ऑलमोस्ट डिफरेंट। yes, it is totally different in all the subjects, so we have to understand that subject and accordingly we have to do the creativity of that particular subject. Next you can see 143 last paragraph, what here it has been said, similar arguments। अब यहाँ से आप लोग देखोगे तो 21st century skills एक न्यू एक्टिविटी प्रेजेंट किया है, वेयर टू पैराग्राफ्स दिए हैं, और वो क्या है पैराग्राफ नाउ वी विल सी। और टेक्स्ट बुक में आप लोग देखोगे तो उसका माइंड मैप भी बना के दिया है 144 पेज पे। सो लेट्स सी व्हाट इट इज़। सिमिलर आर्गूमेंट कैन बी मेड फॉर अदर 21st सेंचुरी स्किल। उसको इन्वर्टेड कॉमा में दिया, मतलब आपका वो सेंट्रल पॉइंट हो गया, ठीक है, वो आपको मिडिल ऑफ द पेज लिखना है। सच एज प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन एंड लर्निंग हाउ to learn. There is some evidence that children who learn to work well and others in one setting may be more effective doing so in other settings. Some other transfer is definitely possible. However, the really important message from the research in the area is that if you want a student to be creative in mathematics, you have to teach this in mathematics classroom. If you want the students to think critically in history, you have to teach this in history. जैसे for example मुझे
एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल के थ्रू भी बताया है स्टूडेंट कि 21st सेंचुरी में अगर आप देखो तो क्रिएटिविटी लेवल ऑफ कोर्स बहुत हाई हो गया है. नाउ डेज टीचर्स आर रियली ब्रिंगिंग मोर क्रिएटिविटी इन द क्लासरूम. Yes, so we can say it is good that now we had actually catch up what the children requires and how to increase the creativity level of a children. तो आजकल के टीचर्स अगर आप देखो तो बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी लेवल अपने क्लासरूम में इंक्रीज कराने हैं. यस, सो यहाँ पे और एक सजेशन भी दिया है दैट अगर हिस्ट्री है तो मैं मैप्स लेकर आ गई क्लासरूम में. यू नो, फ्रॉम पीपीटी प्रेजेंटेशन आई ट्राई टू शो यू सम इंसिडेंट्स विच हैड हैपन इन द पास्ट. तो ऐसे करके मैं स्टूडेंट्स का क्रिएटिविटी लेवल आई कैन इंक्रीज सो दैट द चिल्ड्रन कैन सी दैट एंड कैन अंडरस्टैंड इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट इट्सेल्फ. जो सब्जेक्ट है उसी में आप रिसर्च करके, टीचर्स को रिसर्च करके मोर क्रिएटिविटी लाना चाहिए. और आजकल का 21st सेंचुरी इज़ नोन फॉर दैट. सो यू कैन सी 21st सेंचुरी स्किल्स. 4 points are most important. First one is nowadays children maximum in the classroom able to solve the problem. Of course, you can see because of the good teaching there is a good communication skills of the children had increased. Next is learning how to learn. Okay, teachers आजकल actually में सिखाते हैं कि what is required to learn. Okay, and transfer of skills, and teacher understand nowadays that what is the ability in my child and tries to bring the development of a child. तो ये हो गया आपका थर्ड एक्टिविटी वेयर इट इज शोन हाउ टू डू द माइंड मैपिंग ऑफ दैट पैराग्राफ. Mastering discipline, learning to communicate effectively, engaging civically in discussion and argument. These have been and should remain at the forefront of all education. So you can see नेक्स्ट पैराग्राफ पे स्टार्ट हो गया और वो मैंने आपको स्लाइड के थ्रू शो भी कर दिया स्टूडेंट दैट दिस इज़ द माइंड मैपिंग दैट यू हैव टू मेक इन सच अ वे. ओके, तो मेन टॉपिक इसका क्या है स्टूडेंट? फोर फ्रंट ऑफ ऑल द एजुकेशन. हर एजुकेशन का इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है? नाउ फर्स्ट लाइन में दिया है मास्टरिंग डिसिप्लिन, second one is learning to communicate effectively, and third engaging civically in discussion and argument. So do school skill creativity. तो ये 3 मेन पॉइंट्स है और उसका है फोर्थ फ्रंट ऑफ ऑल द एजुकेशन. बहुत ईजी है माइंड मैप. आप I hope you can able to make by yourself. The ancient talk about the importance of understanding that is true and what is not, what is beautiful and what is not worth lingering over, and what is good in terms of being a worthy person, worker and citizen. These education goals should be perennial. perennial means lasting forever. It means these education goals are going to last forever if we are going through mind mapping. या फोरफ्रंट ऑफ ऑल द एजुकेशन, उसके आपने सब पॉइंट्स निकाल के बना दिए रेक्टेंगुलर बॉक्सेस में और अब आपको बनाने का एजुकेशन गोल्स के मेन पॉइंट्स. सो व्हाट इट इज़ हियर, व्हाट इज़ ट्रू. तो अब एजुकेशन सिस्टम में चिल्ड्रन को मस्ट मेक देम अंडरस्टैंड कि वॉट एवर दे आर स्टडिंग वेदर द फैक्ट्स आर ट्रू और नॉट, वेदर इट इज़ ब्यूटिफुल. ब्यूटिफुल मीन्स वॉट एवर दे आर डूइंग इन देयर लाइफ, वॉट एवर द subjects that they are doing, whether they are enjoying it or not, whether it is worth learning or not. Okay, next is what is good. It means after learning उनको क्या सीख मिला, whether they become the worthy, that is important citizen of our country or not. ये है हमारा एजुकेशन गोल. हमारा आज का एजुकेशन गोल क्या है कि उनको पहले सिखाना कि वो लोग क्या सीख रहे हैं. सीखने के टाइम उनको रियलाइज़ होना चाहिए वॉट एवर वी आर स्टडिंग इट इज़ फॉर बेटरमेंट ऑफ आवर लाइफ. और जो सीख उन्होंने लिया है, वॉट एवर दे हैड लर्न फ्रॉम दैट, दे हैव टू try to use that morals in their life. ठीक है, so that it is the education goals. तो इस तरीके से आपको बनाने का है which I had present in this slide. लास्ट में देखो जूलियन एस्टल ने कवर अप किया है बाय टॉकिंग अबाउट डू स्कूल्स रियली किल क्रिएटिविटी. सो आई विल जस्ट रीड इट टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट हियर इट हैज़ बीन सेड. द शॉर्ट आंसर इज नो, although they certainly can if they forgot 2 important lessons. Julian Astle is saying कि हमको 2 things तो एटलीस्ट लास्ट में याद ही रखना चाहिए.
First, if the maximum number of students are to be given the greatest possible chance of realizing their creative potential, schools need to provide rich and broad curriculum that includes so-called creative subjects that are visual and performing arts. So you can see at last Julian Estelle is saying ki in classroom we have to bring more creativity level. So it is the work of the school to provide high quality and increase the more creativity level in not one subject but also in the other subjects like arts, drawing, sports, not only given more the preference but also subjects like learning subjects like physics, chemistry, bio, or commerce subjects like OCSP, PK, economics, all the subjects, even in the language subject also, children are taught in such a way that they learn the morals from there and they use in their day to day life. एजुकेशन गोल यही है कि आप क्या सीखा, आप सीखने के टाइम उसको एंजॉय किया कि नहीं, और सीखने के बाद उसको अपने लाइफ टाइम में यूज़ किया कि नहीं. दैट इज़ द मेन क्रिएटिविटी ऑफ एजुकेशन. सेकेंडली, जूलियन एस्टल इज सेइंग 145 page number, if they are serious about cultivating real creativity across the curriculum, they need to remember that creativity describes a whole collection of similar but different processes. In other words, they need to understand the central place of disciplines in education and take them as their starting point in curriculum design. So now those who are designing the curriculum, जो डिज़ाइन करता है, टेक्स्ट बुक्स बनाता है, जो चैप्टर्स रखता है, वह उनसे लेके टीचर्स से लेके स्कूल मैनेजमेंट से लेके प्रिंसिपल से लेके ऑल द people who are involved in this education work should think for increasing more and more creativity level in the mind of children. हमारा करिकुलम भी उस टाइप से डिज़ाइन होना चाहिए, हमारे टीचिंग पैटर्न भी वैसे ही रहना चाहिए. टीचर्स को क्लासरूम में माइंड मैप के थ्रू अगर पढ़ाते हैं तो डेफिनेटली द चिल्ड्रन कैन रिमेंबर दिस क्रिएटिविटी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. एंड इन एग्जाम व्हेन दे से ना कि हम भूल जाते हैं, रिमेंबर नहीं रहता है, सब ब्लैंक हो गया, तो वो सब चीज़ नहीं होगा बिकॉज ऑफ द माइंड मैपिंग के थ्रू इफ़ वी टीचर्स आर टीचिंग एंड द स्टूडेंट्स विल स्टार्ट स्टडिंग थ्रू माइंड मैपिंग. दैट हियर इट हैज़ बीन सेड. So let's start icebreakers question. First one, observe the given figure and complete the activities given below. You can see student 3 points are given. First one is replace the main idea by any other thought or title of your own. B, add 3 supporting ideas to the main idea as their branches. C, add 2 ideas to one of the branches that explain the meaning of the branch. Here you can see student 1, mind map is given. The central idea will come in the middle and then it is having the 3 branches. उसके आपको connectors निकालने हैं 3. You have to take out the 3 connectors as a branch. जैसे एक tree रहता है, tree के branches रहते हैं, same way you have to take out the 3 branches of that particular central topic and with that branch 2 more twigs. Okay, that is the newborn branches, that is the 2 more parts or we can say पॉइंट्स और सब पॉइंट्स विल कम आउट. तो सोचो आप इस जगह पे कौन सा ऐसा टॉपिक आप रख के खुद से बना सकते हो जिसके 3 पॉइंट्स आप निकाल सकते हो एज अ कनेक्टर्स और उसके भी आप सब पॉइंट्स 2 निकाल सकते हो. आई कैन टेक वन एग्जाम्पल ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. द मेन आइडिया इज लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, और इंग्लिश लिटरेचर के 3 पॉइंट्स ब्रांचेस आप निकाल सकते हो, दैट इज प्रोज, पोएट्री, ड्रामा. ठीक है, ये तो आपको सबको पता है. ठीक है, अब स्टूडेंट प्रोज के हम निकालते हैं ट्विक्स. ठीक है, तो वो ट्विक्स से 2 टाइप्स है, अभी हमने 4.1 में पढ़ा था, फिक्शन एंड नॉन फिक्शन. ओके, अब फिक्शन का भी आप निकाल सकते हो, अभी 4.1 में पढ़ा है, नॉवेल, शॉर्ट स्टोरी, नॉवेला, यस. एंड नॉन फिक्शन के आपको ऑलरेडी आई हैड टॉट इन द 4.1 itself, that is article, essays, periodical essays. Okay, so in this way you have to do. Move to the next.
Complete the given blank spaces. Balloons are there. Your ideas in the figure that describes your basic preparation for the HSC board examination. Also complete the activities that follow. So टॉपिक है प्रिपेयरिंग फॉर द HSC बोर्ड एग्जामिनेशन. आप लोग सब लोग आजकल यही काम कर रहे हो, तो आप लोग इजीली इसका आंसर भी बता सकते हो. यू कैन सी आई हैड यूज द बबल्स टू राइट द आंसर. फर्स्ट one is done, that is thorough reading of all textbooks. Second, राइटिंग प्रैक्टिस फॉर स्पेसिफिक आवर्स. ओके, आप लोग का आजकल राइटिंग प्रैक्टिस बहुत छूट गया, तो एट होम मेक इट अ पॉइंट दैट रेगुलरली वॉट एवर द नोट्स दैट वी आर गिविंग, प्लीज राइट डाउन इन द नोटबुक. नेक्स्ट, memorization of equations and formulas. If it is a max, some formulas are there. Not only this, in SPOC, because various points are there to by heart and understand and retain in your mind, and for that mind mapping is the best thing. Next point, providing time for relaxation and physical exercise. Of course, in learning, in studies, don't forget that you have to do exercise. Next is preparing memory maps and concept maps. I had told, which is very important. Try to study now with the mind map or concept maps. Okay. Next is going through the college notes and self notes, means whatever the college teachers are regularly sending you the videos, please start studying it. Last one, allocating सफिशिएंट टाइम फॉर रिवीजन. अभी आपके पास इतना सारा नोट्स लिख कर हो गया, पर कितना आप लोग उसको रिवाइज करते हो. सो मस्ट रिमेंबर दैट रिवीजन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो इन दिस वे यू हैव टू डू. Next is on page number 145, brainstorming question, activity 1. Study the given tabular column in pairs. Tell your partner the importance of each given below. So whatever we had studied till this lecture, that is just the revision. So while you will read, you will understand. So let's see. Enhance activities and mind mapping. Point number 1, explore new ideas and concepts. So in this help students get a better understanding for any new ideas by having them create a mind map. A mind map can assist, it means help with understanding, because it conveys hierarchy. It means one after the another you can make the balloons, scribble scrolls abhi sikhaya hai, and relationships, allowing students to see the big picture. If any of the topic, if you are studying, if you are taking the help of the mind mapping, it is really going to help you to understand that topic in a simpler way. Second one, brainstorming. Of course, brainstorming, I had said, is the part of mind mapping. Creative juices for flowing with mind mapping. Mind maps are a great brainstorming tool and can help students let their thoughts flow freely while making important connections between ideas and concepts. So if you are going through brainstorming, it is very easier for us. Okay. Next is third, take notes. If any of the notes which are descriptive of 5-6 pages, बड़ा बड़ा notes है, तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए माइंड मैपिंग टूल इफ़ यू आर यूजिंग, इट इज़ वेरी हेल्पफुल. encourage students to engage in active thinking instead of transcriptions by using mind maps for note taking. Mind maps encourage students to focus on key points, keywords and ideas instead of just writing down what the teacher says. So sometimes if the important points teacher is teaching, describing, तो उसका सिर्फ मेन पॉइंट्स भी लिखते हो, तो later on when you are revising, it is easier for you to understand, recall what the teacher had taught in the classroom. So fourth one is write essays. Students can create an essay outline, gather argument and quotes, or brainstorm ideas for your essays with mind map. If you are taking the help of the mind map, it is easier for us to understand the long essays, long answers for a longer period of time, and we will not forget the answers in half of the page. Next is memorize information. Mind map helps to activate any levels of brain activity and a great tool to help with memorization, from vocabulary words to a foreign language. So okay, any of the words, if some words are there, if some foreign languages are there, if you are not getting in our brain, take the help of the mind map, it is easier for us. Next is create representation. और फॉर एग्जाम्पल आपका कॉलेज में कोई प्रेजेंटेशन है कोई भी सब्जेक्ट का, तो आप कैसे कर सकते हो, इतने बाय हार्ट तो नहीं कर सकते हो. वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ
the mind map. So have a student use mind map to present information in an interesting and engaging way. With mind maps आप सिर्फ keywords और key points याद रखते हो और उसको देख के आप elaborate उसको ही describe करते हो, तो उसको ही mind map कहते हैं. ठीक है. Students can use mind mapping software to create presentation in advance or create one on the spot during a live presentation. This tool is very helpful. Next, seventh one, study for an assessment. Mind maps are a great way for students to gather all the information that may be covered on an examination, including class notes, textbook chapters and reading list. Any of the studies, कहीं पे भी studies में हम लोगों को student studies में you can see this mind map is very helpful. Okay. Eighth one, execute group projects. कोई भी group projects आपका है student, तो वो टाइम पे mind map की मदद से हमारा project fast हो सकता है. By using a mind map, student can visualize that needs to be done and who needs to do what. Okay, कौन क्या काम करने वाला है, पहले से ही आप distribution of work कर लेते हो, तो उसके लिए अगर आप mind map बना के रखते हो, you are going to do this, you are going to do that, then the work would be easier. Using an online mind mapping program is best for group projects, so students can easily share it. So this is the best way of the people to complete their work for a proper period of time. Next is activity 2. Given below is a mind mapping template. Use your ideas or thoughts, concepts to illustrate or develop them. Develop your ideas in the form of main branch, sub branches and tertiary branches respectively. What you can see in this picture, student, here my mind map karke the main central idea is given in the middle, and with that you can see 4 secondary branches or sub branches are kept. First idea, second idea, third idea and fourth ideas, that is the sub branches, and with that sub branches tertiary level branches are there. Okay. I had worked on emotions. See, emotions are of various types. तो आप मिडिल में माई माइंड मैप के प्लेस पे क्या लिखोगे, इमोशंस. ओके. फर्स्ट वन हैप्पी, कभी आप बहुत खुश रहते हो तो आपका फर्स्ट आइडिया हो गया. सेकंड आइडिया सैड, मालूम है सबको. थर्ड इज़ एक्साइटेड, कभी कभी आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हो. फोर्थ इज़ एंगर, ऑफकोर्स एंग्री रहते हो बहुत टाइम. एंड वन मोर यू कैन ऐड बाय योर सेल्फ एंड दैट इज़ स्केयर्ड, डरे हुए कभी कभी रहते हो. कंपल्सरी नहीं है कि आप सिर्फ 4 पकड़ के ही बनाओ, आप 5 आइडियाज़ करके भी बना सकते हो. ओके. मेन ब्रांचेस के सब ब्रांचेस बनाओगे तो सब ब्रांचेस के टर्चरी ब्रांचेस भी आपको आना चाहिए बनाने. ठीक है. सो फर्स्ट वन इज़ द हैप्पी. If we are happy, we are fulfilled, we are contented मतलब satisfied, we are glad मतलब बहुत खुश रहते हैं. Optimistic means positive रहते हैं. Pleased means whatever is happening in front of us, we are happy. तो ये आपका happy का हो गया tertiary level. Next is sad. When you are sad, that time your mood is very down. Blue, it means you don't like anything. Moppy, it means you feel so upset. Next is grief, कभी कभी रोने लगते हो. Sometimes you feel depressed. So this is the tertiary level of emotion. Next is excited. So when we are excited, we are energetic, ecstatic means overjoyed, aroused and bouncy. Next is angry. When we are angry, then we are irritated, resentful, miffed, upset and mad. Next is scared. When we are scared, then we are tensed, nervous, anxious, frightened and terrified. So these are the tertiary level of emotions. इसमें और एक चीज़ बोला है, ऑल्सो राइट अ पैराग्राफ ऑन माइंड मैप यू हैव कंप्लीटेड. अभी इमोशंस पे आप अच्छे से लिख सकते हो, इसको पकड़ के आप पैराग्राफ भी कन्वर्ट कर सकते हो. बट इन एग्जाम इट विल नॉट कम टू कन्वर्ट इनटू पैराग्राफ, सो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, सो दैट्स व्हाई आई हैड नॉट गिवन. नेक्स्ट एक्टिविटी 3, डेवलप अ माइंड मैप फ्रेम डिजाइन टू शो द डेवलपमेंट इन योर पर्सनैलिटी सीन विद इन योर सेल्फ इन द लास्ट 5 years. You can take the help of the following points in order to develop each of them into further branches. ब्रैकेट में देखिए दिया है पॉइंट्स. डेवलपमेंट इन फिजिक्स, सेल्फ लर्निंग प्रोसेस, कम्युनिकेशन स्किल्स, सोशल अवेयरनेस एंड फैमिली responsibility. Now you can see in this slide it is properly given. What is the main idea? It is the personality development. ओके. कोई ज़रूरत नहीं है लास्ट 5 years लिखने की, सिर्फ मेन की वर्ड्स लिखना है इन द सेंट्रल. फर्स्ट पॉइंट क्या है, डेवलपमेंट इन फिजिक्स, मतलब आपका कहना चाहिए फिजिकल हेल्थ. ओके. और उसके टर्चरी लेवल के पॉइंट्स आप डाल सकते हो, फूड हैबिट एंड फिजिकल फिटनेस. नेक्स्ट सेल्फ लर्निंग प्रोसेस. टर्चरी लेवल में आप लिख सकते हो डीलिंग विद प्रॉब्लम पॉजिटिवली, स्पेसिफिक लैंग्वेज, लर्निंग फॉरेन लैंग्वेजेस, डिसीजन मेकिंग. ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के स्मॉल
important things है. Next you can see communication skills. Communication skills you can see what are the tertiary level. Body language, how you are talking, how you are speaking in front of the people, that is public speaking. Okay, of course it requires confidence. Next is social awareness. Social awareness you can see it is of two types. First is responsibility and second is doing the donation work. Okay, so what is your responsibility? Maybe water management, cleanliness drive, tree plantation as a social work that you can do. Yes. Next is donation. क्या donate करते हो? Of course you can donate blood, food, clothes, and even sometimes money. So family responsibility. And family responsibility, if you would see, it is three types: tertiary level, financial, medical, and next is safety. एक और इसमें ऐड कर सकते हो आप, दैट इज बिहेवियर डेवलपमेंट, एंगर मैनेजमेंट, फ्रेंड्स मेकिंग, टाइम मैनेजमेंट. दीज आर द इम्पॉर्टेंट इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. सो इन दिस वे यू हैव टू डू. नेक्स्ट इज एक्टिविटी 4. ये भी देखो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम में. तो इसमें क्या बोला है? डेवलप अ माइंड मैप फ्रेम डिजाइन टू शो द बेनिफिट्स ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स. ठीक है, टू द स्टूडेंट्स. यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इन ऑर्डर टू डेवलप ईच ऑफ देम इनटू फर्दर ब्रांचेस. मेन टॉपिक यहाँ पे माइंड मैप का क्या है? बेनिफिट्स ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स. हम सब ब्रांचेस के पॉइंट्स यहाँ दिए हैं. फिटनेस एंड स्टेमिना, टीम स्पिरिट एंड स्पोर्ट्समैनशिप, बिहेवियर, ग्रुप बिहेवियर, किलर्स इंस्टिंक्ट, विल टू विन. तो ये अब आपको इसके टर्चरी लेवल के ब्रांचेस बनाने हैं. सो हाउ यू कैन डू? आई हैड डन इट फॉर यू. कैन यू प्लीज सी द आंसर? बेनिफिट्स ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ये आपका मेन टॉपिक है. सेंट्रल आइडिया मिडिल ऑफ द पेज वही लिखना है. अब उसके आपको कनेक्टर्स निकालने हैं, सब पॉइंट्स, और सब पॉइंट्स से टर्चरी लेवल के पॉइंट्स निकालने हैं. सो फिटनेस एंड स्टेमिना मतलब मैं फिटनेस ग्रोथ लेती हूँ. ठीक है. सो इसके टर्चरी लेवल टू टाइप्स के हो सकते हैं, फिटनेस एंड स्टेमिना, दैट इज फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ. यस. सो फिजिकल में किस टाइप का हेल्थ चाहिए? वी रिक्वायर स्ट्रेंथ, एनर्जेटिक, इम्यूनिटी लेवल भी स्ट्रांग होना चाहिए, तब जाके हम स्पोर्ट्स प्रॉपर प्ले कर सकते हैं. नेक्स्ट इज मेंटल लेवल, आवर मेंटल थॉट, दैट इज स्ट्रेस. We don't take the stress in the games. Okay, stress buster. Next is sound mind, very calm and quietly we can able to play. Next is patient. Next is team spirit and sportsmanship. इसको आप लिख सकते हो स्टूडेंट, डिसिप्लिनरी ग्रोथ करके आप लिख सकते हो. So what's the answer? You can write time management, responsibility, sacrifice, punctuality. Yes, if you want to do something in games you have to be very punctual. नेक्स्ट इज ग्रुप बिहेवियर. आपका ग्रुप बिहेवियर कैसा है? ओके, किलर्स इंस्टिंक्ट्स एंड विल टू विन. कॉम्पिटिटिव ग्रोथ मीन्स आगे वाले सामने वाला टीम के साथ आपका बिहेवियर कैसा रहना चाहिए. ग्रुप बिहेवियर, किलर इंस्टिंक्ट्स, दैट इज, और विल टू विन. सो किलर इंस्टिंक्ट्स मीन्स यू शुड हैव द एबिलिटी कि यू शुड compete with the another टीम. इतना आप में स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन रहना चाहिए. नेक्स्ट इज, So activity 5 we had already seen in starting of our lecture. So in this way we completed our 3.2 do schools really kill creativity, that is mind mapping. so by this we come to the end of this chapter, that is mind mapping. But in the end I would say that some different types of mind mapping pictures I am कीपिंग इट एज अ स्लाइड. आप लोग देख के और अंडरस्टैंड करो कि एग्ज़ाम में अगर आता है तो इस टाइप के डिफरेंट टैम्पलेट्स आप यूज़ करके अपने आइडियाज़ को एक्सप्लोर कर सकते हो, बना सकते हो. ठीक है. तो मस्ट रिमेंबर, आपका माइंड मैप शुड बी वेरी नीट, clean, and ideas which you are writing, it is well understood by the teacher, then only you will get a good marks in exam. So till then, read the chapter very carefully. Whatever the questions which I had solved today, try to solve it by yourself and enjoy learning. This is Garima May signing off. Stay home, stay safe.
Activity 5 you have to do by yourself, it's not important. Instead I am giving you some more examples of mind mapping so that in exam you can able to do. We can take one example of health. Okay, developing a health habit, अगर ऐसा करके क्वेश्चन अगर आता है, क्योंकि नॉर्मली इट मे कम, तो मैंने खुद से बना के रखा है आप लोग के अंडरस्टैंडिंग के लिए. सो यू कैन सी हेल्थ, व्हाट आर द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, एक्सरसाइज, स्लीप, डाइट, हेल्थ एंड stress. So exercise means warm up, aerobic, stretching regularly we have to do. Sleep of course, अगर हम सोते नहीं हैं देन इंसोमिनिया और कॉन्सिक्वेंसेस और रिजल्ट हमको ख़राब मिल सकते हैं. डाइट ऑफ कोर्स, इन डाइट वी शुड हैव द फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड low in fat foods we should eat so that we should be fit and fine. Next is help. If any problem is there then we have to consult with dietitian or doctors. Next is stress. Of course हमको stress बिल्कुल भी नहीं we have to take it, never we have to take the stress. And what are the tertiary level, that is if it is a stress we should know the cause, effects and solution. एंड व्हाट इज़ द कॉज, मे बी एग्ज़ाम का स्ट्रेस रहता है, वर्क का स्ट्रेस रहता है, रिलेशनशिप मतलब घर पे कुछ प्रॉब्लम हो गया, लाइक फॉर एग्जांपल पेरेंट्स के साथ, मम्मी के साथ, पापा के साथ, तो वो आपको कभी कभी स्ट्रेसफुल कर देता है. नेक्स्ट इज इफ़ेक्ट. आपका इफ़ेक्ट किस पे पड़ता है, ऑफ कोर्स इट इज़ इफेक्टिंग टू योर गोल्स. यस. सो सोल्यूशन क्या है, व्हाट्स द सोल्यूशन, दैट यू शुड डू द योगा. सो इन दिस वे यू कैन डू इट.